Good afternoon, all of you. Can you hear me? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, I have started with hydrocarbons. I think I did one method of preparation. Yes, ma'am. Yes. Okay. So now let's start with the second method. First method, all of you have understood? Yes, ma'am. Transfer hydrogenation also I have done, no, in that? Yes, ma'am. Okay. Next is called as Wurtz reaction. Have you heard about this? Yes, ma'am. Okay, in Wurtz reaction here, you need to start with an alkyl halide. Supposing the alkyl halide is methyl chloride. To that you add sodium. Reaction is carried out in a solvent. Solvent is dry ether. You get the formation of an alkene. Along with the byproduct being, NaCl. Yes, Amok, this is also preparation method. Yes, Ashley. This is preparation method. You're doing the second method of preparation. Now, how many carbon are there in the alkyl halide here? 1, And how many carbon in the alkane? 2. So can I say here the number of carbon will double? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so number of carbon atoms will double here. Vaishnavi, I didn't give anything to write in transfer hydrogenation. I had just given those reactions involving hydrazine and cyclohexane. 2 reactions I have given. So now if you start with ethyl bromide, give me the product obtained. Butane. Yes, you'll get N-butane. Byproduct here being NABR. What if I start with isobutyl chloride? Give me the product obtained here. Number of carbon will double. See, what you have to do is you have to break the carbon halogen bond और जहां break कर रहे हो वहीं से ये alkyl group का mirror image बना दो. See, I'm showing it to you. Can I say this was the carbon halogen bond here? Break Yes, that ma'am. chlorine and ये जो part है उसका mirror image बना दो. So this is the alkane which you'll get. Name this alkane. 2,4 dimethylhexane. Yes. Okay. 2,4 नहीं है 2,5 है ना? Yes, ma'am. Sorry. हम लोग को Cl निकालना है और बाद में वापस वो सेम चीज लिखना है ना. हाँ, सेम चीज मिरर इमेज बना के लिखो. अब यहाँ पे बताओ क्या बनेगा. दिस इज Br.
2,7. This is the alkane which you'll get, correct? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. But why do we always take sodium? Because in Wurtz reaction it is sodium. You can also use zinc. But Okay. zinc, if you use zinc, the reaction is known as Frankland. Instead of sodium, you can use zinc. Miss, what is the reaction called? Frankland reaction. Okay, miss, thank you. You need to write this also. मैम सब पे ड्राई ईथर है ना? हाँ, solvent is dry ether. आप फ्रैंकलैंड के भी करोगे ना? हाँ, खाली मैकेनिज्म जब करूंगी तब बताऊंगी कि सोडियम की जगह जिंक ऐड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है? ओके मैम. So Frankland is when you use zinc instead of sodium. Did you all finish writing this? 2 minutes, ma'am. Finished all of Ma'am. you? Done, no? Done. Yes, ma'am. Okay. What if I use CH2 से और एक रिंग बनेगा हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन. you'll get this. Yes. All of you are understanding or no? Yes, ma'am. Okay. So now let us see the mechanism. What mechanism it will go through. You're having an alkyl halide. So I'm just writing a general alkyl halide, Rx. To this you're adding sodium. Now what does a metal do in a reaction? Metal का सिर्फ एक ही काम होता है reaction में. It has to give electrons. You know metals are electron donors. Am I right? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So whenever you add a metal in a reaction, it has to do only one thing, that it has to donate electrons. Sodium can donate how many electrons? 1. 1. 3. Yes, one sodium will donate 1 electron. It will donate where? Could you tell me? The halogen halide. Halogen. It will give electron to halogen. This is Sakshi, it is alkyl valid for all alkyl halides. It could be chloride, bromide, iodide, fluoride. All the halides. What you all say? Sodium will give electrons to halogen. It's alkyl. Can I say this molecule is polar? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is the positive end and this is the negative end. Which Yes, is the ma'am. electron deficient end? Miss, alkyl. Alkyl part. Sodium has to give electrons to Alkyl. alkyl group. How will Yes, it give electron to halogen? So sodium has to give 1 electron. As it gives the electron to alkyl group, this bond will break. How would you expect this bond to break? Electrolytic. Electrolytic. Can I say X will come out as X minus? Yes, ma'am. So that alkyl group gets an electron from sodium. Can I say sodium has changed into Na plus? Yes, ma'am. And X has come out as X minus? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. you get the formation of sodium halide and along with that R with a electron. Can I say this is a free radical? Yes, Yes, ma'am. ma'am. And free radicals are electron deficient or electron dense? Yes, octet is incomplete. तो इसका octet complete करने के लिए और क्या होगा फिर से? Can I say फिर से सोडियम आएगा? एक Yes, और ma'am. और इसको एक और इलेक्ट्रॉन देगा ताकि इसका octet complete हो जाए.
So now the carbon has completed its octet, but in doing so, what charge will this carbon develop? Negative. Positive. Negative. Carbon anion banega यहाँ पे. Or Na will change into Na plus, correct? Yes, ma'am. Now this carbanion which has been formed, it acts as a nucleophile. It attacks another molecule of alkyl halide. It attacks this and removes this. So what I'll get? Na plus will combine with that X minus forming NaX. Did you understand this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, give me the mechanism of the last step. Which type of reaction do you think is? Substitution. Substitution. What is the mechanism? SN2. Very good. The solvent tells you what mechanism it is. What is the solvent? Dry. Ether. Right. Dry A ether protein. means A protein. A protein में कौन सा mechanism होगा? SN2. Very good. कौन सा alkyl halide use नहीं कर सकते हैं यहाँ पे? Neopentyl. हाँ, and also can I say 3 degree? Yes, Yes, ma'am. Ma'am. क्योंकि 3 degree पे क्या नहीं हो सकता है? It cannot. SN2 में. SN2 नहीं हो सकता है 3 degree. Are you understanding? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So can I say if I use a 3 degree here, then it will not undergo Wurtz reaction? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The mechanism of Wurtz is SN2. Whenever SN2 reactions are carried out, we know 3 degree cannot undergo SN2. Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जब SN2 नहीं होगा तो इसका E2 से जाएगा मैकेनिज्म. E2 मतलब क्या? Elimination. Elimination. Transition state वाला. हाँ, एलिमिनेशन होगा. तो अगर हम कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं SN2 के फॉर अ 3 डिग्री, कैन आई से 3 डिग्री का SN2 तो हो नहीं सकता है. Yes, ma'am. हाँ, ma'am. Yes, ma'am. Until the conditions of SN2 or 3 degree will always undergo E2. E2 मतलब elimination होगा उसका. So if I take a 3 degree alkyl halide here, and to that if I add sodium and dry ether, can I say I'm providing the conditions for SN2? Yes, ma'am. Yes, ma'am. But इसका SN2 तो नहीं हो सकता है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है. तो इसका E2 हाँ, ma'am. होगा. E2 होगा मतलब एलिमिनेशन. प्रोडक्ट क्या आएगा फिर इसका? एलिमिनेशन होके अल्कीन बनेगा. समझा? Yes, ma'am. All of you understood this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this thing you need to note down what I have said. When conditions of SN2 are being provided for a 3 degree alkyl halide, it undergoes E2 mechanism. When conditions of SN2 are being provided to a 3 degree alkyl halide, it undergoes E2 mechanism instead of SN2. Ma'am, can you repeat the sentence? If conditions of SN2 are applied for a 3 degree alkyl halide, if conditions of SN2 are applied to a 3 degree alkyl halide, it undergoes E2 instead of SN2. It undergoes E2 instead of SN2. Ma'am, can you repeat one more time, please? Okay, when conditions of SN2 are being provided for a 3 degree alkyl halide, when conditions of SN2 are provided to a 3 degree alkyl halide, then it undergoes E2 instead of SN2. Then it undergoes E2 instead of SN2. Got it? Yes, ma'am. Thank you. There are around more than 200 students in this batch. How come so many less students are attending? I don't know. Recording. Huh? Yes, Recording. ma'am. What about the other subjects? इसके अराउंड ही रहता है. 150 तक जाता है. हाँ मैम, मैक्स 150 है. जैसे 200 कभी आते नहीं है. नहीं पहले मैम. स्टार्ट में नहीं होता मैम, था मैम. बस अगर नया स्टार्टिंग में चैप्टर होता है तो तो आता है. 220 ऐसे आते थे बच्चे. हाँ मैम. यस मैम.
इवन मैथ्स ऐसे कम आते हैं, मैथ्स तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा होगा. नहीं आते हैं. You'll have to ask the other students. Are the notes uploaded on Google Drive? No, ma'am. No, Parna. Notes are still not uploaded. Are you all doing that? Like you all are uploading the notes and all? I think I'll have done it for reaction mechanism, no? What about the video lectures? Video recordings? Yeah, I think they are on YouTube. They are uploaded. Okay. Even for GOC, it is there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Because one student was asking me. So what they have to type like on YouTube? डिस्क्रिप्शन में है मैम में सब. Okay, okay. अच्छा ये लिख के हो गया, ये जो लिखा है मैंने यहाँ पर? Yes, ma'am. Done, ma'am. Okay. अभी ये conditions तो हम SN2 के दे रहे हैं. You can see the solvent is also aprotic. Am I right? Yes, ma'am. So my question to you is, can I bring about this reaction in a protic solvent like water? अगर protic लिया तो mechanism SN1 होगा. Am I right? Yes, ma'am. तो फिर 3 degree का भी हो सकता है. But then my question to you is, can I use water instead of dry ether? Will the mechanism be same? No. Okay. What will happen if I use water? Edge bonding. Edge bonding of what? SN1. हाँ? SN1 होगा. मैम बाद में वो Na के साथ रिएक्ट करेगा. Excellent. Yes. If I take water instead of dry ether, sodium will not react with alkyl halide. Sodium will react with water violently to give you what? NaOH. NaOH. Yes. So you cannot use water in this reaction. Got it? Yes, ma'am. Yes, You ma'am. cannot use any protic solvent here because protic solvent use किया तो sodium will displace that acidic hydrogen from the protic solvent. So protic solvents cannot be used in Wurtz reaction. Whenever metals are being used, you cannot use protic solvents. Why you cannot use protic solvents when metals are being used? Metals will react. Metal will prefer Yes, because reacting with it metal, instead. yes, metal will react with the solvent instead of reacting with the substrate. This is understood now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you cannot use any protic solvent when metals are being used. Ma'am, can you give a note? Okay, write it down. Protic solvents cannot be used. Protic solvents cannot be used when a metal is being used as a reagent. Protic solvents cannot be used when a metal is taken as a reagent. हम उसकी स्पेलिंग वो वर्ड की प्रोटेक्ट. Protic तो PROTIC. Protic solvents cannot be used when a metal is taken as a reagent. This is because the metal would react with the solvent. Ma'am, could you repeat from starting? Protic solvents cannot be used. Protic solvents cannot be used when a metal is taken as a reagent. This is because the metal would react. This is because the metal would react with the solvent. This is because the metal would react with the protic solvent. This is because the metal would react with the protic solvent.
to liberate hydrogen gas. You can write on this reaction over there. Example, sodium reacting with water giving you NaOH and hydrogen. इसमें भी सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है because can I say Na has changed into Na plus? Yes, Yes, ma'am. ma'am. और उसने अपना Yes. इलेक्ट्रॉन किसको दिया है? alkyl अरे ये रिएक्शन में H. ऑक्सीजन को H2 कैन आई से H का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है यहाँ पे Yes, ma'am. बस Yes, yes ma'am. ma'am और यहाँ पे 0 हो रहा है ना, Yes, हाँ ma'am. बस तो इलेक्ट्रॉन हाँ। गेन किसने किया है? बस H2 H ने. हाँ, तो सोडियम ने यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन दिया है पर उसने H को दिया है गिविंग यू हाइड्रोजन गैस. गॉट इट? यस तो मैम Yes, ma'am. सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन तो Yeah. उसको दे दिया. So will now sodium be available to give electron to alkyl halide? No. No. No, ma'am. So it has No. already given its electron to water. Is it understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yeah ma'am And hence protic solvents cannot be used in this reaction wherever metals are being used. Okay, mechanism all of you have understood it is SN2. Yes, ma'am. yeah Yes, ma'am ma'am. Okay. What is the order of reactivity of alkyl halides for this? For the same alkyl group, which alkyl halide would react the fastest? Fluoride, bromide, chloride, iodide. Fluorine. Fluorine. Whether SN1 or SN2, the order of reactivity remains the same. This reactivity order, please make a note. This is always true. For SN1 or SN2, it will not change. And what is the reason for that? weak bonding This bond is the weakest, so it will break the fastest. Got it? Yes, ma'am. And this bond is the strongest. Carbon fluorine bonds are very strong. They don't break easily. Did you all write this order? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now if I take a compound something like this, and to this I'm adding sodium, Na, in dry ether. But I'm taking only one equivalent. One equivalent means what? One more. only one mole But can I say this will need 2 moles because there are 2 halogens? Yes, ma'am. ma'am. But I am adding only 1 mole. So that means 1 halogen will depart. You know which one it is. Correct? Yes, ma'am. yes ma'am Bromine जाएगा या chlorine? bromine Bromine. bromine Product यहाँ bromine 2 equivalents मतलब दोनों जाएंगे. तब भी product दो.
Did you all get the answers? First one, tell me what to write. Yes, Rahil, you are correct. Did you get this? Yes, ma'am. Second one. Ma'am, just 2 rings. Yes. Just 2 rings. How It's like only this? one ring. Yes, ma'am. यहाँ से तो BR हट गया, तो इसका CL कहाँ गया? मैम 4 होंगे, 4 रिंग्स। यहाँ पर और एक, तो इसके CL कहाँ मैम गया? 2 इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? 2 इक्विवेलेंट मतलब दोनों हाइड्रोजन निकालना है। ओके मैम तो निकल गया ना क्लोरीन। कैसे Combined निकला? मैम 2 रिंग को जॉइंट। 2 रिंग को कैसे ज्वाइन करोगे? ये 2 रिंग हो गया, इसका क्लोरीन और इसका क्लोरीन कहाँ गया? यहाँ से तो BR और EBR निकला है, am I right? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्लोरीन को नहीं मैम कहाँ? को Ma'am, जॉइंट, so will that को be जॉइंट 6 मैम। rings? मिस तो हाँ? 3 रिंग्स और बाजू में CL और BR। 3 रिंग्स। मैम 2 एक साथ नहीं बना सकते। Miss, ये doesn't ऐसे 3 combine to रिंग। form a big ring. Ma'am, will there be 6 rings? 6 रिंग्स हाउ? तो वो लास्ट वाले रिंग्स दोनों को क्या करोगे? सपोजिंग ये 6 भी हो गए यहाँ पर, तो लास्ट के जो 2 रिंग्स होंगे उनके CL को क्या करोगे? कुछ समझ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? Yes, ma'am. मैम उनका CL नहीं निकलेगा Na के साथ। क्या? उनका CL Na के साथ नहीं निकलेगा। निकल, हाँ तो फिर वो रिंग का अगर CL निकल रहा है Na के साथ, सपोजिंग ये CL का ये CL निकल गया, तो यहाँ पे कार्बेनाइन बना, यस मैम। तो वो कार्बेनाइन जो बना है उसके साथ कौन रिएक्ट करेगा? अभी हाइड्रोजन तो है नहीं ना अवेलेबल कि H आ जाएगा वहां पर। यस The reaction won't occur. हाँ Ring मैम, वो expansion. Reaction will occur. Miss the other part of the ring. Like तो कुछ बेंड हो जाएगा अलग वे में कुछ वैसे। हाँ मैम, join. मैम 3 रिंग का हो जाएगा, 3 कार्बन का रिंग। 3 कार्बन का रिंग मतलब तीनों में एक दूसरे से joint हो गए। मैम बना 3 के कार्बन का रिंग और एक साइड में क्लोरीन और दूसरे साइड में ब्रोमीन हो सकता है। सेम मैम बनेगा। बाइसाइक्लो बन सकता है। फर्स्ट हाँ, सेम बनेगा। बाइसाइक्लो बनेगा, दैट इज द करेक्ट थिंग, दिस इज द प्रोडक्ट। ओके, How? दोनों गए कि मैम नहीं? यही तो बोला था मैं, हाँ मैं हम यही बोलने की ट्राई कर रहे थे। को जॉइंट ये। अच्छा, कब से? तुमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तुमने बोला 3 ज्वाइन रिंग, हो 2 जाएगा रिंग, बस वैसे। तब 6 मैम वही रिंग। तो बोला को जॉइंट। मिस ज्वाइन हो जाएगा वैसे ही तो बोले मिस। मैम बाइसाइक्लो बोला अभी। हाँ अभी बाइसाइक्लो बोला तो मैंने लिखा ना, तो बाइसाइक्लो बोलना था, नाम नेम यूज करना था। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे बनाइए। एनीवे यू गॉट इट, सो वेरी गुड। ये इलेक्ट्रॉन इधर आके देगा सोडियम, एम आई राइट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. BR हट जाएगा, सो कैन आई से पहला फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर सोडियम आके एक और इलेक्ट्रॉन देगा इसमें, Yes, ma'am. तो जब एक और इलेक्ट्रॉन देगा तो चार्ज क्या आ जाएगा इस कार्बन पे? Negative. तो कैन आई से ये कार्बन इसी कार्बन को यहाँ पर अटैक करके इलेक्ट्रॉन देगा और ये निकल जाएगा, तो ये बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड बनेगा और Cl निकल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू गेट द बाइसाइक्लिक कंपाउंड। इसका नाम क्या होगा बाइसाइक्लिक? 1,1 1.1. जी 0 नाम तो याद नहीं होंगे अभी। याद थे मैम। याद है मैम? मैम आप रिपीट कर सकते हो?
क्या mechanism? हाँ मैम वो सेकंड वाला. Okay, I'll do it. Miss, can you please write it on a new page if possible? Yeah, I'll do that because here it's हाँ मिस mess हो रहा है एकदम. sodium has to come and give electron, correct? Yes, ma'am. And remove the bromine first. So can I say I'll get a free radical formation here? Now sodium will come and give one more electron to that same carbon. Why it will give an electron? Can I say the octet of carbon is incomplete? Yes, ma'am. Yeah, So what charge will come on this carbon? negative. Negative. Now this is negatively charged carbon, the electron pair. The electron pair will shift like this. ये electron pair यहाँ पे इस carbon और इस carbon को bond कर देगा और इसमें से ये हटा देगा. And that is how you get this bond formation. Got it? Yes ma'am. Yes, ma'am. Is there a name for the third step? Name for the? Third step जिसमें वो electron दे रहा है. This is intramolecular SN2. Okay, ma'am. What do you mean by intramolecular SN2? So within the molecule. Yes. Okay, all of you have understood this mechanism? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, the second method is done. Now I'm proceeding to the third method. Ma'am, how many methods are there? 8 or 9 are there, I think. क्यों दो में ही थक गए हो क्या? नहीं मैम, पर इतनी सारे चाहिए क्यों? मैम इसमें दो प्रोडक्ट methods से NaBr बन- और NaCl बनेगी ना एक एक. हाँ, NaBr भी बनेगा, NaCl. Ma'am, हाँ, सिर्फ alkane के लिए. हाँ, सिर्फ अल्केन के लिए 8 या 9 मेथड्स हैं. Okay, ma'am. Can you show the previous page? Yeah. Done, ma'am. This is done. Yes, ma'am. So now let us go for the third method. Third is by reduction of alkyl halides. What do you mean by reduction? Gain of electron. Okay. Alkyl halides, when treated with LiAlH4, this is known as lithium, aluminium hydride. It's a reducing agent. You get the formation of alkane. Reaction here is carried out in dry ether. Dry ether is a solvent. Lithium, aluminium hydride. You have done volumetric redox किया है redox? No. No, ma'am. No, ma'am. अच्छा, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? वो पता है? ऑक्सीडेशन नंबर पता है? हाँ मैम, पढ़ा तो है अभी याद. हाँ, कैन आई से हाइड्रोजन का -1 होगा और कार्बन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? हाँ मैम. बिकॉज हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये -1 है और ये +1 है ऑक्सीडेशन स्टेट. +1 से कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे गया है वो? Neutral. अच्छा, रुको. I'll write it. Wait. If I write the molecule itself, then you will understand. Actually, वो +1 नहीं है. If I write the hydrogen atoms also, if I write, supposing if I write all the hydrogen. Which atom is more electronegative amongst carbon and halogen? Halogen. तो इसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसका कौन सा है? +1. +1. +1. Between carbon and hydrogen, Carbon. it's more electronegative. So -1 इस पे होगा और hydrogen पे +1. For this bond again, can I say carbon -1, hydrogen +1? Yes, ma'am.
Again for this bond, carbon -1 and hydrogen +1. Yes, ma'am. So give me the overall oxidation state of carbon here. Yes, -2. -2. Yes, so carbon here is -2. कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है. यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ. -4. -4. -4. Got it? So Yes, -2 ma'am. to -4. Carbon has changed its oxidation state from -2 to -4. Can I say it has gained electrons? Yes. Yes, Yeah, ma'am. Gain of electrons is called as Reduction. Reduction. Did you understand what I have said? Yes. Yes, ma'am. So now I'll tell you how the mechanism occurs here. मैम वापस एक्सप्लेन करोगे? कार्बन और ma'am. हैलोजन बॉन्ड में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कार्बन या हैलोजन? हेलोजन. तो इसको -1 ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करोगे और इसको +1. ठीक है? यस मैम. For this bond. For this bond, can I say carbon is more electronegative than hydrogen? यस मैम. So -1 on carbon, +1 on hydrogen. Again, same is true for these two bonds. Again, for these Yes, two ma'am. bonds, carbon will get -1 for each, and hydrogen will get +1. ओके मैम, समझ गया. So total will be -2 on carbon, and finally it is going into -4. So Yes, ma'am. oxidation state of carbon changes from -2 to -4. So this reaction can be classified as a reduction reaction. यस मैम. Okay. Now we'll see the mechanism. Lithium aluminum hydride का structure बता रही हूँ. This is lithium aluminum hydride. Aluminum is forming how many bonds here? 4. 4. Give me the formal charge on aluminum. 4-. Plus होगा minus होगा? प्लस. Formal charge minus होगा ना इस पे? I'm not talking about माइनस oxidation होएगा. state. I'm not talking about oxidation state. I'm talking about formal charge. Aluminum के valence shell में कितने बस electrons एक्स्ट्रा होते हैं? एक एक्स्ट्रा है राइट बॉन्ड. हाँ. Aluminum के सुपर valence ऑक्साइड shell कर में सकते हैं ना मैम? बस 3. 3 valence. Super octet नहीं है, इसका octet ही है. Can I हम say तीन. aluminum के 3 valence electrons होते हैं? Yes, या ma'am. 4 ma'am. है. पर यहाँ 4 4 है. तो माइनस. माइनस चार्ज आएगा ना. हाँ Yes, मैम. ma'am. इनके बीच में किस तरह का बॉन्डिंग है? बस Ionic इलेक्ट्रो bond. आयोनिक. आयोनिक. The bonding between lithium and the aluminum hydride ion is ionic because this is plus and this is what? Minus. And Minus. इनके बीच में bonding can I say covalent है? हाँ Yes, Yes, Covalent. ma'am. Actually it is a polar covalent bond. Why polar? Yes. Aluminium. नो डाइपोल ये मोमेंट. metal है, metal electropositive होगा, am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now to this, when you add alkyl halide, what happens is aluminum hydride is a very good hydride ion donor. What do you mean by hydride? H H minus. 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 So H minus comes and attacks the alkyl group and removes this. So what product I'll get? Alkane. RH. Which type of mechanism is this? SN2. मालूम पड़ता है, मैंने कहा था. किसको देख के मालूम पड़ता है? ट्राइथर. Right. तो SN2 mechanism है यहाँ पर. How many hydride can aluminum donate? 3. बस 3. Total 4. नहीं ना? बस 4. 4 सॉरी. It can reduce 4 molecules of alkyl halide to 4 molecules of alkane. Got it? Yes, Yes, ma'am. ma'am. जो aluminium बचेगा, that will combine with the X forming AlX3, or lithium also will take one of the X forming LiX. So the byproducts here will be LiX and AlX3. Mechanism you can see is SN2. What if I use a 3-degree alkyl halide here? Will 3-degree alkyl halide undergo reduction with lithium aluminum hydride? No, ma'am. No. Mechanism क्या है lithium aluminum hydride का? SN2 है ना? Yes, ma'am. इसका SN2 हो सकता है क्या? No. नो. No. प्रोडक्ट E2 बताओ से क्या? जाएगा. हाँ, E2. E2 से जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? डबल बॉन्ड. Can I say alkene बनेगा? Yes, हाँ ma'am. मैम. Yes, ma'am. Okay. So this will undergo E2. It will not undergo reduction, it will undergo E2.
Did you understand, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम वो proceed? लास्ट क्वेश्चन पे E2 के ऊपर एरो के ऊपर क्या ड्राई ईथर है? हाँ, ये ड्राई ईथर है ना, ड्राई ईथर यूज किया। लिथियम एल्यूमिनियम ma'am. हाइड्राइड जब भी यूज करते हैं तब ड्राई ईथर ही यूज करना पड़ता है। आई कैन नॉट यूज प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को मैंने वाटर में लिया तो ये क्या करता है, हाइड्राइड जो है, हाइड्राइड इसका जो देता है वो मेटल इसको दे रहा है ना हाइड्राइड, तो अगर वाटर लिया तो अपना हाइड्राइड H प्लस के साथ कंबाइन हो जाता है। सो H माइनस विल कंबाइन विद H प्लस टू गिव यू व्हाट? हाइड्रोजन। Hydrogen. ठीक है, सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज नॉट स्टेबल इन वाटर, you cannot use water when you use lithium aluminum hydride, so you have to Okay, use ma'am. a aprotic solvent। aprotic solvent मतलब mechanism उसमें क्या होगा? SN1। got it? SN2 होगा। can I proceed ahead? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम वो जो लास्ट वाला कंपाउंड है दैट अंडरगोज E2 सिंस इट कैन नॉट अंडरगो SN2, राइट? yeah ओके 3 डिग्री पे SN2 नहीं हो सकता है। यस मैम। What's just 1 minute? Let the students complete this and I'll go to the previous page. Did you all finish writing? Done, ma'am. Done, ma'am. Okay, third last means I think you're talking about the second page. What's which one? Okay. Okay, now reduction of alkyl halides can also be brought about. Instead of lithium aluminum hydride, you can go for this. This is called as sodium borohydride. This is also a reducing agent, sodium borohydride. But here the solvent to be used is water. Okay, solvent is water. Here also the product will be alkane. So can I say reduction हो रहा है यहाँ पर alkyl halide का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसमें mechanism क्या होगा? Let us see. SN1। इसमें सेंट्रल एटम वहां पे एल्यूमिनियम था, इसका सेंट्रल एटम कौन होगा? बोरॉन। Boron। Structure is similar to NaBH4. This is also a hydride ion donor, but it doesn't donate a H minus very easily. Why it doesn't donate H minus very easily? Because can I say electronegativity of boron and aluminium if I compare? Aluminium और बोरान एक ही ग्रुप में आते हैं पीरियोडिक टेबल के? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पर बोरॉन फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप 13 का और एल्यूमिनियम सेकंड एलिमेंट है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. can I say electronegativity of boron will be higher than the electronegativity? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So Yes, aluminum is ma'am. electropositive. So hydride वो जल्दी दे देता है, got it? Yes, ma'am. But boron being electronegative ये hydride जल्दी देता नहीं है क्योंकि इसमें इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना हाइड्रोजन को, Yes, तो ma'am. वो जल्दी Yes, देता ma'am. नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? अल्काइल हैलाइड पहले खुद ही ब्रेक होगा, it will break into R plus and X minus. Now this R plus will go and approach for the hydride. So that R plus will go for the hydrogen and you'll get RH. So which mechanism is this which I'm doing here? SN1। SN1। Solvent ने बता दिया होगा शायद। Yes, ma'am. Solvent कौन सा यूज हुआ है? प्रोटेक। समझा? Yes, ma'am. So NaBH4 can be used in water because यहाँ से H minus जल्दी नहीं निकलता है due to the high electronegativity of boron. So if I want to reduce a 3 degree alkyl halide, I'll use what? LiAlH4 or NaBH4? NaBH। LiH4। हाँ, NaBH4 will reduce a tertiary alkyl halide. Am I right? Yes, Yes, ma'am. Because lithium aluminum hydride cannot reduce tertiary. It will give you elimination product. All of you are understanding or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And which will Yes, be ma'am. preferable for a primary alkyl halide? Li। Li.
Yes, because primary alkyl halide पे कौन सा preferred mechanism होता है? SN2. हाँ, तो SN2 कौन सा reagent करेगा? LiLH4 या NaBH4? LiH4. Yes. LiH. The best reagent to reduce primary alkyl halide is lithium aluminum hydride, and for reduction of tertiary, you have to go for NaBH4. Is this clear in your mind? Yes, ma'am. Ma'am. Not clear? Ma'am, here Na won't react with water. Is it Na? No, it's Na plus. Okay, ma'am. Yeah. Does Na plus react with water? No. No. No, it Never. won't. No. Okay. Salt को नमक को डाल दो पानी में. कुछ होगा क्या? No, ma'am. No, ma'am. So will Na plus react with water? No. No, ma'am. खाली नमक वाला पानी मिलेगा. Correct? Yes, ma'am. नींबू पानी. इसका हाइड्रोलिसिस भी नहीं होता है ना. You know, this is a salt of strong acid, strong base. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. That is why it does not undergo hydrolysis. It will not break water molecule. ये क्या कर रही हूँ मैं कब से? हाँ. Was the Now slow in- is the rate? Sorry. This is the rate determining step, right? R This R is plus the and rate X determining. minus. Yes, miss. Formation of carbocation. And there is one more reagent called as TPH. TPH is triphenyl tin hydride. Phenyl group क्या बोल रहे हो? मैम हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन स्लो होगा कि फास्ट? इसमें ये सॉरी ये देख लिया आपने? यस मैम. तो इसमें समझ में आता है कि SN1 है. यस मैम. तो Okay, ma'am. SN1 का rate determining step यही होगा. स्लो. Got हाँ it? मैम. This is triphenyl tin hydride. pH क्या होता है? Phenyl. Phenyl Phenyl. मतलब benzene ring, am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now this can be used in water also and triether also. So can I say this can bring about both SN1 and SN2? Yes, ma'am. यहाँ पे water use किया तो SN1 से जाएगा और dry ether use किया तो SN2. So can I say this will be the best reducing agent because it can reduce primary, secondary, tertiary, in fact all the alkyl halides. Yes, ma'am. Yes, miss. So triphenyl tin hydride can be used in both dry ether as well as water. So this reagent can bring about both SN1 as well as SN2. और SN1 SN2 हुआ मतलब you can reduce any alkyl halide here. Is the third method understood by all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can I proceed ahead to the fourth one? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next method is by reduction of. Ma'am, can you please show the previous slide once? Harshita, you're talking about which are? This can be secondary also and tertiary also, no? Both secondary and tertiary can undergo SN1. No? See, secondary can undergo both SN1 also and SN2 also. We have done that. It's only for tertiary. Tertiary cannot undergo SN2. Am I right? Or primary का SN2, SN1 हो सकता है, but it is going to be very slow for primary. And tertiary cannot undergo SN2 at all because of steric hindrance. Done, ma'am. Thank you. Next is by reduction of aldehydes and ketones. By reduction of aldehydes and ketones. What have I written?
Aldehyde. This is an aldehyde. Aldehydes, when treated with can you tell me what is this? Zinc mercury. This is known as zinc amalgam. Okay, zinc amalgam. What are amalgams? Have you heard about them? Alloys. Yes, they are alloys of Alloys of mercury. Mercury, yes, ma'am. a metal with mercury. So this is zinc amalgam in presence of concentrated HCl. This reagent reduces an aldehyde to alkane. It also reduces a ketone to an alkane. The process is known as Clemenson's reduction. This reaction is called as Clemenson's reduction. Could you give me the change in oxidation number of carbon? Supposing R here is CH3. तो यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा. इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है. यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ. -1. Ma'am, +1. +1. +1, sorry. +1 going to -3. yes. So how many electrons gain? ±4. Can I say 4 electrons gain? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पर so I can write 4 electrons. यहाँ पर बताओ. +2. Changing to -2. -2. so again 4 electrons gain. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'll show you in the mechanism how it is gaining 4 electrons. Let us see the mechanism. This is your aldehyde. Can I say the medium is strongly acidic because of HCl? Yes, ma'am. So H plus will attack first because of the acidic medium. Could you tell me where will the attack occur? Oxygen. Oxygen. So can I say oxygen will give one of the lone pair? It will share one of the lone pair with H. So this is your protonated aldehyde. Give me the formal charge. Oxygen plus. Negative. Plus, Positive one. Because of this positive charge, can I say it will start pulling the pi electron towards itself? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो कार्बन पे प्लस आ जाएगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पर तुमने मेटल डाला है. Am I right? Yes, ma'am. Yes, मेटल ma'am. तो प्लस आने नहीं देगा क्योंकि मेटल खुद के इलेक्ट्रॉन्स दे देगा. Zinc can provide how many electrons? 2. 2 So it will give its 2 electrons to. carbon. So what am I going to get? O का लोन पेयर आ गया उसके पास और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए जिंक वाले. Give me the formal charge on carbon. Negative. Negative. -. मीडियम में एसिड है H प्लस है तो H प्लस कहाँ पर अटैक करेगा आप? Negative. Carbon. Negatively Carbon. charged carbon. Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो aldehyde has now changed into what? Alcohol. Alcohol. But can I say अभी भी पोलर है. यहाँ पे डेल्टा माइनस है. Yes. यहाँ पे डेल्टा. Yes, ma'am. तो रिएक्शन रुकेगा थोड़ी. H प्लस फिर से अटैक करेगा. कहाँ पर? Oxygen. Oxygen. So H2O again there'll निकलेगा. be again there'll be protonation of oxygen. Give me the formal charge. Oxygen positive. Positive. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? H2O निकलेगा. H2O. निकलेगा. जब H2O निकलेगा तो इस पे चार्ज क्या आएगा? Negative. Negative. Positive. Positive. पर तुमने मेटल तो ऐड किया है ना. और तो वो मेटल इस पे electrons दे पॉजिटिव देगा आने देगा कार्बन ही को. नहीं. तो मेटल क्या करेगा? कार्बन 2 electron. इलेक्ट्रॉन्स दे देगा. ये वाटर तो निकल गया बाहर. अब कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए. किसके आ गए? Zinc. Zinc. उस पे फॉर्मल चार्ज बताओ. Negative. 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 अब लास्ट में कौन आएगा? Hydrogen attack. Hydrogen. अब ये पोलैरिटी गया कि नहीं गया मॉलिक्यूल से? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. गया. Will H plus attack? No. No. Will zinc give electrons? No. 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 Reaction will stop. बंद हो गया. Alkane बन गया. Got it?
Yes, ma'am. जिंक का क्या होता है? Zinc has formed what? Zn plus 2 ना? यस मैम. +2 H plus ने तो H plus यूज हो रहा है यहाँ पर, तो कैन आई से क्लोराइड बचा हुआ है? यस मैम. ZnCl2. ZnCl2 will be formed. ओके मैम. How many electrons have been donated to carbon here? 4. 2 बार आके जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ये को miss. चार इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं कार्बन में. Did you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, miss. So can I say zinc amalgam concentrated HCl will first reduce the aldehyde to alcohol, which then further gets reduced to alkane. समझ में आ गया है ये? Yes, ma'am. Yes, miss. Did you all finish writing? Yes. Wait, ma'am. कीटोन का भी सेम ही होगा, खाली यहाँ पर H की जगह क्या होगा? Alkyl. Alkyl group. हाँ, तो यहाँ फाइनली R ही होगा, यहाँ पे सब जगह H की जगह R होगा. Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, mercury का alloy लिया है यहाँ पर शिवानी. Why have I used an alloy? Why not directly I use zinc? तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं किया है ना? No, ma'am. If I directly use zinc here, zinc will again violently react with HCl, giving you what? ZnCl2. ZnCl2. The Hydrogen gas. liberation of Perfect. hydrogen gas. So can I say zinc 0 से +2 में जा रहा है? यस. Yes, और ma'am. हाइड्रोजन Yes. +1 से किस में जा रहा है? Zero. तो Zero. जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है इसमें? हाइड्रोजन. Hydrogen. हाँ, मगर अगर अमालगमेटेड यूज किया तो उसमें ओवर पोलराइजेशन हो जाता है, हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होता है उसमें. ये ओवर पोलराइजेशन you'll be doing under the chapter of electrochemistry. Okay, so amalgamated zinc is used because we don't want zinc to react with HCl. अगर अमालगम यूज किया तो हाइड्रोजन का ओवर वोल्टेज यूज होता है. ओवर वोल्टेज मतलब ये लिबरेट नहीं होगा H2. So zinc will have to give electrons to carbon here. Got it? Ma'am, Yes, so ma'am. basically use an alloy just so that it can react with the. You have to use only its alloy with mercury because mercury वाला alloy ही will cause over voltage of hydrogen. Okay, ma'am. ठीक है? Can I proceed further? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now reduction of aldehydes and ketones is done here using zinc amalgam HCl. I can also bring about the reduction of aldehydes and ketones. Instead of zinc amalgam HCl, you can use NH2NH2. What is NH2NH2? I've done it in last class. Hydrazine. Hydrazine, yes. You can use hydrazine and alcoholic KOH. Then also the products formed are same here. Aldehyde is reduced to alkane, even ketone is reduced to an alkane. But this reaction is now called as Wolff-Kishner reduction. That was Clemenson's when you use zinc amalgam HCl. When you use hydrazine and alcoholic KOH, it is Wolff-Kishner. So now we'll see the mechanism for Wolff-Kishner. And why do we need these two different methods? That also I will tell you.
In the first step, aldehyde or ketone reacts with hydrazine. There is a dehydration process. Dehydration मतलब क्या? H2O. यहाँ से O निकलता है और यहाँ से H2 निकलता है. So dehydration, H2O निकलेगा. तो यहाँ पर बचेगा क्या? Could you tell me? ये बचेगा. Yes, ma'am. और यहाँ पर H2 निकल गया. So कहना इसे ये बचेगा. Yes, ma'am. This is called as, this is hydrazine. This is known as hydrazone. ये कैसे इसका मैकेनिज्म होता है? ये स्टेप का मैकेनिज्म I'll be covering under the chapter of aldehydes and ketones. अभी नहीं करूंगी. अभी इस स्टेप का मैकेनिज्म नहीं करूंगी. क्यों नहीं करूंगी वो भी रियलाइज हो जाएगा. रुको. Let me first proceed. हाइड्रोजीन के साथ साथ मैंने और क्या ऐड किया है? KOH. Alcoholic KOH. So alcoholic KOH, can I say it's a base? Yes, ma'am. Base will always react with an acid. इसका एसिडिक हाइड्रोजन बताओ कौन सा है? C वाला. C वाला या N वाला? जल्दी बताओ. N. हाँ, why is the N N one? N is giving electrons. Which is- Conjugated. Very good. That should be the answer. Can I say if I remove this H, nitrogen will develop what charge? Negative. Negative. तो can I say उसका resonance होगा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यहाँ पे अगर H निकालोगे तो there is no resonance, ना? Yes, ma'am. So this is the acidic hydrogen. This one or this one you can remove. So if I remove this H, that H will combine with OH forming what? Water. Acid base reaction हुआ, and you get the formation of this as the conjugate base. The conjugate base has what charge? Negative. Now there will be resonance. Resonance में ये electron pair यहाँ shift होके यहाँ shift होगा. Yes, ma'am. We'll get R. This is the resonating form. Did you understand this? इसमें charge carbon पे बताओ क्या है? Negative. 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 Which of these two forms is more stable? Resonating में कौन सा ज्यादा stable है? नीचे वाला. नीचे वाला ज्यादा stable है या ऊपर वाला? ऊपर वाला. Reason बताओ. नाइट्रोजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है. Yes, nitrogen पे negative is more stable than carbon. So upper one is more stable. So can I say the lower one is more reactive? Yes, ma'am. So this will now react with water. Water यहाँ बना था ना? Am I right? Yes, ma'am. Water इसको क्या देगा अब? Water दे भी क्या सकता है? Water dissociate होके क्या H बनेगा? plus and OH minus. हाँ, तो इसके पास क्या जाएगा? H plus. H plus. H plus गया. और water में से क्या बचा है अब? OH minus. माइनस. मतलब मीडियम वापस बेसिक हो गया. Yes, ma'am. तो फिर वो OH माइनस फिर से अटैक करेगा और एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा. और Yes, ये H प्लस Yes, निकलेगा. ma'am. समझा? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. ma'am. So now I'll get R C H H N double bond N. अब इस N पे चार्ज बता दो. H प्लस निकल गया. Negative. Negative. Triple bond. Can I say हाँ ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा बाहर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this will come out as what? Nitrogen gas. Nitrogen. Yes. और कार्बन पे अब चार्ज बताओ. नेगेटिव. Negative. Negative. तो वाटर आके क्या देगा इसको? H plus. H plus. और क्या बन जाएगा? Alkane. 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 Did you understand? Yes, Yes, ma'am. ma'am. कितने स्टेप्स लिखे हैं मैंने इस मैकेनिज्म में? 5-6 तो दिख ही रहे हैं. 7. Yes, हाँ. ma'am. इसके और ये स्टेप के 6 स्टेप्स और हैं मैकेनिज्म के. ये स्टेप के खाली 6 मैकेनिज्म के स्टेप्स हैं. अगर वो यहाँ मैं ऐड कर लूं तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट आउटकम? 13 steps. हाँ, एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट आउटकम? द रिजल्ट यही विल होगा बी ना. the result will be you will not attend my lectures after that. You all will get so scared. Got it? मैम ये Yes, ma'am. फर्स्ट वाले का था कि सेकंड वाले का था? ये कौन से स्टेप का मैकेनिज्म है? अल्कोहलिक KOH के बाद वाला मैकेनिज्म है. फर्स्ट स्टेप जो हाइड्रोजीन से इसका रिएक्शन होता है उसका मैकेनिज्म नहीं दिया है मैंने. ये मैं कहां पर करूंगी? हाइड्रोजीन वाला मैकेनिज्म
aldehyde ketone. aldehyde That's ketone. ketones. तो यहाँ भी इस यहाँ से यहाँ तक के 6-7 स्टेप है मैकेनिज्म में, वो यहाँ दे दूंगी तो तुम लोग मेरी बात ही सुनना बंद कर दोगे उसके बाद. You all will hate me also then, and I don't want that to happen. Already I know you all hate me, but फिर hatred बढ़ जाएगा. No, ma'am. Ma'am, No मैम की ऑर्गेनिक तुम लोग प्यार, ऑर्गेनिक से तो तुमको प्यार है नहीं. Am I right? इतना भी बुरा नहीं है. मैम GOC तो अच्छा ही था. GOC अच्छा था ना. चलो गुड. Ma'am, it's not bad, but it's painfully long. It is. Sometimes it just gets painfully long. मैम एग्जाम तो सब अच्छा है. You have to go through logical steps ना to arrive at the answer. Problem यही है. तो इसमें steps जो होते हैं वो steps समझना बहुत जरूरी है, वरना आंसर लाना तो नामुमकिन है. अगर तुमको इसका मैकेनिज्म मालूम नहीं है तो आंसर लाना is impossible. I'll give you one question now, you will realize it. कि मैकेनिज्म बगैर आंसर लाना पॉसिबल नहीं है. Did you Miss, can finish I- writing this Can you explain the third last step? Third last. from here? Yeah. OH will remove this acidic hydrogen. So as H plus goes, the electron pair will come on N. Because of that, what formal charge it will develop? Negative. तो अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा और ये इस पे, तो ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा. And this will form what? Nitrogen. What is the driving force for this step? Can anybody tell me? Liberation of a gas. Can I say when gases are liberated, entropy becomes very large? Yes ma'am. So this will definitely liberate nitrogen easily. ये spontaneous होगा, ये खुद ही होगा. तुम चाहो नहीं चाहो ये खुद ही होगा. Ma'am, the second compound is hydrazine. This is hydrazine. This is hydrazone. Okay, thank you, ma'am. Did you all finish writing the mechanism? Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes, Ma'am, can you ma'am. explain the last step? From here. Yes, ma'am. So From as which N2, point? this part, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So as N2 leaves, can I say this electron pair is getting transferred to carbon? Yes, ma'am. So because of that, carbon develops negative charge. So Okay. water which is there, water will give its H plus to this, Got it. Thank you. forming alkane. Okay. So now I'm giving you one question. Will the product form be same in both the cases? If yes, then also write the products. If no, then also write the individual products. Now you'll have to go through the mechanism. उसके बगैर तो उसका आंसर आने वाला नहीं है.
I'm waiting for the answer. किसी को कुछ मिला भी या नहीं? मैम रुको, नहीं मिला मैम। मैकेनिज्म से भी नहीं आ रहा है? मिस हो रहा है। देखो ट्राई करो, I'll give you 2 minutes more. You wanted for bicyclo 110 वाला? अच्छा ये वाला. This is the mechanism. Tell me once you're done. Okay. It's phenol for the first one नहीं है. और phenol का बेंजीन ही नहीं है उसमें, तो phenol कैसे? Saket, it is for the second one. कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सच बताओ आप, जल्दी जल्दी. मैम बता दो। नहीं, तुमको नहीं आ रहा है? फर्स्ट वाले का हुआ, सेकंड का फर्स्ट वाला क्या मिला? साइक्लोहेक्सेन. Very good. Yes, first one is cyclohexane. Could you explain me why or how you got cyclohexane? Can I say ketone पे तो रिएक्शन होगा, पर अल्कोहल पे भी होगा वहां पे? यस मैम. क्योंकि H+ अल्कोहल को भी नहीं छोड़ता है ना, प्रोटोनेशन होकर ही निकलेगा और जिंक आके इधर इलेक्ट्रॉन देगा. Am I right? Yes, ma'am. उसमें देखो पहले कीटोन चेंज होता है अल्कोहल में. देखो मैकेनिज्म में, क्लेमेंसेंस के मैकेनिज्म में पहले कीटोन अल्कोहल में चेंज होगा, फिर अल्कोहल रिड्यूस होता है. मैम एक स्टेप में पैरा डाइऑल बनेगा ना? इसमें क्या बनेगा? उसमें ऊपर ना? हाँ ऊपर और नीचे. इंटरमीडिएट OH हो जाएगा. हाँ और फिर दोनों रिड्यूस हो जाएंगे. यस मैम. इसका प्रोडक्ट क्या होगा? इसका ये होगा. इसका रिडक्शन नहीं होगा क्योंकि कहना है से हाइड्रोजीन पहले इसके साथ ही हाइड्रोजोन बनेगा उसका. Yes, ma'am. हाँ, तो इसके साथ थोड़ी रिएक्ट हो रहा है उसका. समझा? यस मैम. So if I want that this group only should get reduced, I have taken this compound and I want only this group to get reduced. So which reaction should I go for? Voltishner. Yes.
But if I want this to get converted into cyclohexane, what have I got to use? Clemenson. All of you understood the difference? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This group is called as an acid sensitive group. Because can I say it reacts with an acid? So if you want to retain that acid sensitive group, you cannot use an acid. देखो मैं क्या बोल रही हूँ, ये एसिड सेंसिटिव है. एसिड सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एसिड का रिएक्शन होता है, H+ के साथ रिएक्ट करता है कि नहीं है? Yes, ma'am. So any group which reacts with H+ is called as an acid sensitive. ये भी एसिड सेंसिटिव है, ये भी एसिड सेंसिटिव है. बट हाँ, तो अगर इसको मुझे रखना है मॉलिक्यूल में, तो कैन आई यूज एसिड इन द रिएक्शन? No, No. हाँ, I cannot use. Why I cannot use? It will react with because it is acid Because sensitive. ये वरना एसिड के साथ तो रिएक्ट करेगा. अगर मुझे इसको चेंज नहीं करना है तो I'll have to use a base. Then I'll use a basic medium instead of acidic medium. So for acid sensitive groups, if you want to retain them in the molecule, you have to use a base. And if you want to reduce the acid sensitive group, then go for Clemenson's. Is this understood what I have said? Yes. Yes, miss. Ma'am, please repeat one last time. Okay. Can I say this is an acid sensitive group because it reacts with H+? Yes, ma'am. If you want to retain this acid sensitive group, can I use this reaction? Yes, ma'am. Retain करना है मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही रखे रहना है उसको मुझे. No, not possible. हाँ, क्योंकि अगर ये मॉलिक्यूल के अंदर रहेगा, कैसे रहेगा? अगर मैंने इसमें एसिड डाल दिया तो फिर रिएक्ट हो ही जाएगा. Am I right? Yes, ma'am. So to retain acid sensitive groups, you have to use a basic medium. To retain an acid sensitive group in the molecule, you have to use a basic medium. That means you'll go for Wolff-Kishner. Ma'am, can you show the mechanism of the first one? Mechanism of the First one. Okay, just 1 minute. Just let me write this question. Then I will explain. इसका भी मैकेनिज्म दे दो. अब यहाँ पर मैंने कौन सा ग्रुप ऐड किया है? Acid. ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं No, होता. miss. No, miss. Electron. हाँ, Ria, you are talking about the mechanism of this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, so can I say zinc will come and give electrons here? पहले तो H इसको अटैक करके ये OH हो जाएगा. Pi bond shift होगा, zinc आके इसको electrons देगा. Yes, ma'am. तो carbon will develop what charge? Negative. Negative. So that H+ will come and give electrons here again. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Sorry, H+ will go and join with that carbon. So H इधर आ जाएगा and this will change into OH. So can I say you get an alcoholic group? Yes. Yes, So ma'am. this alcohol and this alcohol both will get further reduced with this to alkane. Okay, ma'am. Got it? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब इसमें बताओ मुझे क्या होगा? Will the product form be same? Yes. Miss, this will be base sensitive. Yes. So give me the product in both. Ma'am, mechanism के Cyclohexane. किसमें cyclohexane? Cyclohexane Miss, chloride second in वाले में. first. Cyclohexane chloride in first. Okay. And second one? Only cyclohexane. 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 कैसे ये बनेगा? Elimination होगा इसमें alcoholic OH है तो. अरे हाँ मैम. हाँ मैम, याद आ गया? अल्कीन होएगा. इसको भी mechanism के through करना है. देखो यहाँ पर क्या होगा, ये ग्रुप तो पूरा रिएक्ट हो जाएगा. Am I right? Yes, ma'am. Cl एसिड के साथ तो रिएक्ट नहीं करता है, बिकॉज़ HCl के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं है, तो Cl will be retained here. Do you agree?
Yes, ma'am. Yes, miss. अब यहाँ पर ये हाइड्रोजीन तो इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसको रिड्यूस करेगा टू अल्केन, करेक्ट? Yes, ma'am. बट अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH इसका एलिमिनेशन भी करेगा ना अल्काइल हैलाइड का, Yes, ma'am. एलिमिनेशन करेगा तो अल्कीन बनेगा ना यहाँ पर. Yes, ma'am. So can I say the products formed are different here? Yes. समझा? Yes, ma'am. बिना मैकेनिज्म के ये सब प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या तुम? यू शुड नो कि क्या हो रहा है. हाइड्रोजीन इसके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर तुमको रिडक्शन देगा, बट अल्कोहलिक KOH जो है वो यहाँ पर एलिमिनेशन भी देगा ना तुमको. Yes, ma'am. Is this understood now, all of you? Yes, miss. What if I want to convert, say, RX into RD? Could you give me a reagent for this? ये D क्या है? Deuterium. Deuterium. हाँ. X की जगह मुझे D लाना है. आज के reactions में से ही देखो. What reagent is to be used here? DCl. Tell me. Reduction of alkyl halides देखो, ये reduction है. Reduction of alkyl halides में क्या use किया था मैंने? Lithium, aluminum hydride. Miss LiAlD4. LiAlH4. With Yes. dry ether. So can I use LiAlD4 here? Yes, Yes, miss. Yes, Yes, I'll get RD. Got it? Yes, ma'am. ma'am. So this Miss, is how can we you'll be also able. use NaBD4? Yeah, NaBD4 you can use. Okay, miss. Okay. And that triphenyl tin hydride की जगह you can use, instead of that H you can use D over there. D. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. So these type of questions are asked and you're supposed to know कि reagent कौन सा हो सकता है या ये reagent add किया तो product क्या होगा. ठीक है? So I've completed 4 methods of preparation. Remaining 4-5 जो बचे हुए हैं next class में I'll take and start with the reactions of alkenes. ठीक है? ये अभी तक alkenes ही चल रहा है. उसके बाद alkenes, alkynes और aromatic भी होगा इसमें. Miss, how lengthy is this chapter? This is a very big chapter, hydrocarbons, because 4 parts है ना. Actually 4 chapters का एक chapter है. Okay, miss. ठीक है? But don't worry, we will be completing the syllabus by October end or 15th of November, maximum 15th of November. So you won't have any problems for syllabus तो आराम से हो जाएगा. You don't have to worry. हमारी तरफ से हो जाएगा. That is the Miss, तुम्हारी हमारा तरफ backlog से का कैसे क्या? होता है? That is going to be the question mark. हाँ बोलो what? Miss, what about the backlogs? हाँ तो that is what I am saying. मेरी तरफ से तो हो जाएगा syllabus. तुम्हारी तरफ से कैसे complete होने वाला है? That you have to now think about. So I think they are going to keep some orientation for you all, I think, in the coming week. So there, I think Why is the orientation there? all the teachers will be speaking to you all.